नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। अमा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। प्रजावाणी समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी त्यांची प्रलंबित दखल घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या। समस्या सोडवण्यासाठी आदिवासी एकत्र, आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचे सभेत रूपांतर। लग्न समारंभात सहभागी झालेले कंदिसींना, नवविवाहित जोडप्यांना लग्नाच्या भेटवस्तू। 2 डॉक्टरांचा रस्ता अपघातात मृत्यू, रिम्स कॉलेजचा परिसर शोक केंद्र बनला। मोठ्या थाटात सुब्रमण्य स्वामी षष्ठी कार्यक्रम, भाविकांनी मोठ्या संख्येने येऊन विशेष पूजा। आजच्या सविस्तर बातम्या। दुर्गम भागातील लोकांच्या समस्या तातडीने सोडवण्यासाठी पावले उचलावीत असे जिल्हाधिकारी राहुल राज यांनी सांगितले। जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठकीच्या सभागृहात झालेल्या प्रजावाणीचा एक भाग म्हणून जिल्ह्यातील विविध भागातून याचिकाकर्त्यांचे विविध प्रश्नांवरील अर्ज प्राप्त झाले। संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिकरित्या प्राप्त झालेल्या अर्जाची तपासणी करून ते सोडवण्यासाठी पावले उचलतील अशी सूचना करण्यात आली। विभागांचे आतापर्यंत प्रलंबित असलेले अर्ज तपासून ते तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश त्यांनी दिले। प्रजावाणीच्या या तक्रारी सोडवण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। या महिन्याच्या 21 तारखेला राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत हैदराबाद येथे बैठक असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी उद्यापर्यंत त्यांच्या विभागाची थोडक्यात माहिती द्यावी, सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयामध्ये उपस्थित वाढवण्यासाठी पावले उचलतील असे ते म्हणाले। शहरातील कोमरम भीम कॉलनीतील समस्या सोडवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी तातडीने पावले उचलतील या मागणीसाठी आदिवासी हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले। सोमवारी त्यांनी वसाहतीतून रॅली काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरले। त्यांनी आपल्या समस्यांचा उल्लेख करत मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी केली। पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला असतानाच आंदोलकांनी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले। या प्रकरणाची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी राहुल राज यांनी घटनास्थळी पोहोचून आंदोलकांच्या समस्या लक्षपूर्वक ऐकून घेतल्या। कोमरम भीम कॉलनीत राहणाऱ्या आदिवासींच्या घरांना घराचा दाखला देऊन मूलभूत सुविधा द्याव्यात अशी मागणी तुडुंबदेबा जिल्हाध्यक्ष गेडाम गणेश यांनी केली आहे। जनता वरकू जय आदिवासी, जय आदिवासी, आदिवासी पट्टाली जनता वरकू पट्टाली जनता वरकू। ప్రధానంగా కొమరం భీం కాలనీ 72/23 సర్వే నంబర్లో గత చాలా సంవత్సరాల నుండి కూడా అక్కడ ఆదివాసీలు నివసిస్తున్నారు కాబట్టి నివసిస్తున్నటువంటి ఆదివాసీలకు పట్టాలు ఇవ్వాలి, తక్షణ మౌలిక సమస్యలైనటువంటి కరెంటు, విద్య, వైద్య సౌకర్యం కల్పించాలని కోరుతూ ఈరోజు ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ జిల్లా కమిటీ మరియు అనుబంధ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కొమరం భీం కాలనీ నుండి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీగా రావడం, జిల్లా కలెక్టర్కు మెమోరాండం ఇవ్వడం జరుగుతున్నది। కాబట్టి ఇప్పటికైనా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రజాసేవ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటే, తప్పకుండా అక్కడ ఎవరైతే నివాసిస్తున్నటువంటి కొమరం భీం కాలనీలో నివసిస్తున్నటువంటి ఆదివాసులు ఉన్నారో వాళ్ళకు మీరు వెంటనే పట్టాలు ఇచ్చి 5 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయాలి। అదేవిధంగా తక్షణ మౌలిక సమస్యలు కరెంటు, విద్య, వైద్య సౌకర్యం కల్పించాలని చెప్పేసి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ తరపున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। తర్వాత ఒక నెల తర్వాత ఖచ్చితంగా మేము హైదరాబాద్కి వెళ్ళి ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది। తర్వాత ప్రజాసేవ ప్రభుత్వం ఒకవేళ పట్టించుకోకపోతే ప్రజాసేవ కార్యాలయానికి కూడా మేము వెళ్ళడం జరుగుతుంది। आदिलाबाद मधील उपक्रमांशी संबंधित अनियमितता एका मागून एक समोर येत आहे।
काही दिवसांपूर्वीपर्यंत सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असलेले जोगुरामण्णा यांच्यावरही या अनियमिततेचे सूत्रधार असल्याचा आरोप होत आहे। जिल्हा मुख्यालयाच्या अंतर्गत असलेल्या रणदिवे नगरच्या मागे एका खाजगी रिअल ट्रेनने बेकायदेशीर पूल बांधण्याच्या घटनेची बातमी अम्मा न्यूजमध्ये नुकतीच प्रसारित होण्याआधी पुलाचा आणखी एक प्रकार पुन्हा उघडकीस आला आहे। आदिलाबाद ग्रामीण मंडळातील तंतोली रस्त्यावरील या बेकायदा पुलाची आता चर्चा सुरू आहे। या परिसरात उभारण्यात आलेल्या उपक्रमात जाण्यासाठी हा घाट असल्याचा आरोप स्थानिक करत आहे। त्याच विषयाबाबत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रजावाणीत तक्रार करण्यात आली आहे। बेकायदा मार्गावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली। నా పేరు రోహిష్ అండి। ఇది ఏదైతే బ్రిడ్జ్ ఉందో ఇల్లీగల్, దీనికి ఎన్ఓసి పర్మిషన్ ఏ పర్మిషన్లు కూడా లేవు। మళ్ళీ ఇంకోటి అక్కడ ఉన్న లేవట్కి రేరా రిజిస్ట్రేషన్లు కాలేదు, మళ్ళీ దానికి పర్మిషన్ లేదు, మళ్ళీ డిటిసిపి అని ఉంటుంది దానికి కూడా పర్మిషన్ లేదు। ఇది అక్రమంగా రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా వాళ్ళు చేస్తున్న దౌర్జన్యం, ఇది ప్రజలను అందరినీ మోసం చేస్తున్నారు ఇట్లా కట్టబెట్టి। ఇది మొత్తం ఇల్లీగల్। ఇది 13 ఎకర్ల చిల్లర ఉంటుంది। ఇది ఇక 200 చిల్లర ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి, దీంట్లో 100 చిల్లర్లు ఏదో అమ్మేశారు। ప్రతి రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా ప్రతి జనాలని మోసం చేస్తున్నారు ఇట్లా చేసుకుంటా। అందరు ప్రజలకు ఒకటే కోరి డిటిసిపి పర్మిషన్ ఉన్న రేరా రిజిస్ట్రేషన్ అయినా లేవర్సే కొనాలని చెప్తున్నాను। ఇది ఏదైతే మన అధికారం పార్టీ ఏదైతే ఇప్పుడు లేదు జోగిరామన్న గారు, దీని వెనుక మొత్తం అతనే ఉన్నాడు, మొత్తం అతనే ఇల్లీగల్ పనులు మొత్తం చేపించాడు। టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన పను ఇది మొత్తం। అతను ఏదున్నా దేంట్లోనా అతను ఖచ్చితంగా అతని కమిషన్ తీసే ఉంటుంది, దేంట్లోనా అతని పార్ట్నర్షిప్ ఖచ్చితంగా అతని ఇది మొత్తం ఇల్లీगल చేపించేది మొత్తం। आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील प्रजासेवा भवन नेहमीच पर्यटकांनी गजबजलेले असते। विधानसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना भेटण्यासाठी अनेक चाहते आणि कार्यकर्ते आल्याने गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले। ग्रामीण मंडळातील लांडसांगवी आर्ली बी या गावातील अनेकांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची शिष्टाचार म्हणून भेट घेतली। त्यांच्या समस्या त्यांनी ऐकून घेतल्या। त्यानंतर त्यांच्या उपस्थितीत अनेक ग्रामस्थांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आणि त्यांनी स्कार्फ देऊन आमंत्रित केले। चांदा बेल्लुरी अय्यप्पा मंदिरात सुब्रह्मण्य षष्ठी पूजनाचा कार्यक्रम सोमवारी भव्य पद्धतीने पार पडला। सुब्रह्मण्य स्वामी यांची मोठ्या भक्तिभावाने पूजा कार्य केले। शेकडो भक्तांनी गर्दी करून स्वामींच्या मूर्तीला सजवून भगवानाला अभिषेक केला। तेथे येणाऱ्या भाविकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी मंदिर समिती अंतर्गत व्यवस्था करण्यात आली होती।
ते स्वामींना श्रद्धेने मोजतात आणि त्यांची भक्ती पद्धती व्यक्त करतात. सूर्यकांत गुरुस्वामी व मंदिर समितीचे सदस्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम शानदारपणे पार पडला. माजी आमदार जोगुरामण्णा सहभागी होऊन स्वामींच्या कृपेला पात्र ठरले. कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विकास म्हणाले की एनसीसी हे शिस्तीचे टोपण नाव आहे आणि एखाद्याला राष्ट्रसेवा एक भाग असल्याचा अभिमान वाटला पाहिजे. आदिलाबाद जिल्हा केंद्रात 32 तेलंगणा बटालियनच्या नेतृत्वाखाली आयोजित एनसीसीचे वार्षिक प्रशिक्षण शिबिर संपले. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले कर्नल विकास यांचे एनसीसी कॅडेट्सची स्वागत केले. सर्वप्रथम मानवंदना घेऊन कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली व प्रशिक्षणात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदक प्रदान करण्यात आले. ते म्हणाले की शिस्तीचे टोपण नाव असलेले एनसीसी वर्षातून 3 वेळा विद्यार्थ्यांसाठी शिबिरे घेत आहे आणि अनेक विषयावर प्रशिक्षण देत आहे. या शिबिराचा मुख्य उद्देश त्यांनी शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या बळकट करणे व विषयाचे ज्ञान वाढवणे हा असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत माता की तेलंगाना बटालियन की इसकी वॉल्यूम कम करेगा. आप सभी को पता है आपका जो कि फायरिंग जिनका 2 सेंटीमीटर दूर so much. वो वीडियो के माध्यम से उनके अंदर न्यूज देके इन्होंने सब लोगों को हमेशा हमारे राज्य शासनाच्या महालक्ष्मी योजनेतून महिलांना मोफत बस प्रवासाची सुविधा देऊन कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या कंडक्टर व चालकांचा काँग्रेस पक्षाच्या वतीने गौरव करण्यात आला. स्थानिक आरटीसी बसस्थानकावर अल्पसंख्याक नेते मोहम्मद रफीक आणि फयाज शाम यांच्या नेतृत्वाखाली हा कार्यक्रम पार पडला. ते म्हणाले की तेलंगणा राज्यातील नवीन काँग्रेस सरकारने दिलेल्या 6 हमींपैकी त्यापैकी 2 24 तासाच्या आत लागू केले आणि त्यांचे आश्वासन पाळले. उर्वरित 4 आश्वासनही 100 दिवसात अंमलबजावणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी उघड केले की ते सरकारच्या कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. समस्या सोडवण्यासाठी मदत करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज कांग्रेस पार्टी जनाब कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब की हिदायत पर और हमारे मोहम्मद रफीक साहब के सदारत में आज नया बस स्टैंड आरटीसी आदिलाबाद में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें कंडक्टर्स और ड्राइवर्स की तैनात की गई है. इसलिए कि उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि महालक्ष्मी स्कीम के नाम पे रियासती गवर्नमेंट ने जो स्कीम मुतारफ़ कराई है तेलंगाना में, उसका सही इस्तेमाल करते हुए जो हमारी माँ बहनें उनका इज्जत करते हुए उनको जो फ्री टिकट का स्कीम चालू किया गया है उसका सही इस्तेमाल करना, बल्कि आज वो लोगों को जो सो सम्मान किया गया है कंडक्टर्स और ड्राइवर्स का आरटीसी का. आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ऐसे जो भी स्कीमात है
कांग्रेस गवर्नमेंट मुतारफ़ कराई है, 100 दिन के अंदर अमल करने का जो वादा करी है, इंशाल्लाह उस पर भी अमल करते हुए उसको भी हम पब्लिक के सामने लाएंगे और उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्रात रिम्समधील 2 डॉक्टरांचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाला। महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडाजवळ रविवारी रात्री ही घटना घडली। आदिलाबादहून 3 बाईकवरून पांढरकवडा येथे गेलेल्या डॉक्टरांना परतीच्या प्रवासात टोल प्लाझाजवळ अपघात झाला। दुचाकीस्वाराच्या समोरून येणाऱ्या ट्रकने धडक दिल्याने 2 मेडिको विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला। या घटनेत डेव्हिड राज आणि बालसाई यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य एक मेडिको जखमी झाला। प्राथमिक तपासादरम्यान पोलिसांनी हन्मकोंडा जिल्ह्यातील डेव्हिड राज बालसाई हा विजयवाडा अवनीगड्डा येथील विद्यार्थी असल्याचे सांगितले, जो रिम्स मेडिकल कॉलेजमध्ये 3ऱ्या वर्षात शिकत आहे। ही माहिती मिळताच रिम्सचे संचालक जयसिंग डॉक्टरांच्या पथकासह घटनास्थळी रवाना झाले। या अपघातात रिम्स मेडिकल असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी शोक व्यक्त केला। डॉक्टरांच्या मृत्यूसह रिम्स कॉलेजमध्ये एक शोकांतिका घडली। महाराष्ट्रातून ॲम्ब्युलन्समध्ये मृतदेह आल्यावर मेडिकलच्या सहकारी विद्यार्थ्यांना अश्रू अनावर झाले। आपल्या हरवलेल्या मित्रांना पाहून त्यांच्या विलापनाने अनेकांना हळहळ वाटली। सारा परिसर शोकांकुल झाला। दुसरीकडे कुटुंबीय व नातेवाईकांच्या आक्रोशाने रिम्सचे कॉलेजचे परिसर भरून गेले व शवविच्छेदनानंतर मृतदेह घटनास्थळावरून रुग्णवाहिकेतून थेट आदिलाबादला नेण्यात आले। रिम्सचे संचालक जयसिंग राठोड यांच्यासह वैद्यकीय पथक, कनिष्ठ डॉक्टर आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या आवारात पार्थिवेला आदरांजली वाहिली। त्यांनी फुले टाकली आणि भावुक झाले। आदिलाबाद काँग्रेस पक्ष विधानसभा मतदारसंघाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी लोकांमध्ये मिसळत आहे। ज्यांना नम्रपणे निमंत्रित केले आहे त्यांच्या शुभ कार्यात ते उपस्थित राहत आहे। निमंत्रकांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे मनापासून स्वागत केले। त्यांनी लग्नाच्या ठिकाणी जाऊन उपस्थित राहिले आणि नवविवाहित जोडप्याला आशीर्वाद दिले आणि भेटवस्तू दिले। त्याचाच एक भाग मध्ये पटना येथील विविध फंक्शन हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कल्याण विविध सोहळ्यांमध्ये त्यांनी व्यवस्थेत असलेल्याही कार्यक्रमामध्ये कंदिसींना सहभागी झाले आणि विशेष आकर्षण म्हणून ते नेहमी त्यांच्या सोबत आहे। समारंभात हजेरी लावून त्यांनी सर्व नातेवाईक आणि मैत्री मंडळाचे हार्दिक स्वागत करण्यात आले।
सुब्रमण्य स्वामीच्या षष्ठी दिनानिमित्त ओल्ड हाऊसिंग बोर्ड रणवीरनगर पटणम येथील उमा महेश्वरा हरहरा अय्यप्पा देवस्थान येथे भव्य समारंभ आयोजित करण्यात आला होता। पूज्य श्री दामोदर गुरुस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली सुब्रमण्य स्वामी पूजनाचा कार्यक्रम विशेष पूजेसह अत्यंत श्रद्धाळू भावकांच्या मध्यभागी भव्यपणे पार पडला। शेकडो भाविकांनी सुब्रमण्य स्वामीच्या मूर्तीला फुलांनी सजवले आणि त्यानंतर स्वामींचा अभिषेक करण्यात आला। मंदिर समितीचे सदस्य कोला वेणुगोपाल रेड्डी आणि बॅटरे अशोक यांनी या पूजेसाठी भाविकांची कोणतीही गैरसमज होऊ नये यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था केली। तसेच नेहमीप्रमाणे अय्यप्पाच्या प्रभूसाठी भिक्षा कार्यक्रम आणि भक्तांसाठी अन्नदान कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आले होते। హరిహర ధర్మక్షేత్రం లోపల రవీంద్రనగర్ ఓల్డ్ హౌసింగ్ బోర్డులో గల మన హరిహర ధర్మక్షేత్రం లోపల అశేషమైనటువంటి జనవాహిని మధ్య లోపల స్వామి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వేడుకలు దిగ్విజయంగా ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యం లోపల జరుపుకోవడం జరిగింది। సంవత్సరం లోపల చేసేటువంటి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పూజ ఒక ఎత్తు అయితే ఈ సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి నాడు చేసేటువంటి పూజ సంవత్సరం లోపల చేసేటువంటి పూజ ఫలితాన్ని అంటే కూడా మహత్తరమైనటువంటి ఫలితాన్ని కలిగిస్తుంటుందని చెప్పేసి మనకి శివపురాణం లోపల వాల్మీకి రాసినటువంటి శివపురాణం లోపల చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది। దాన్ని అనుసరించి మన హౌసింగ్ బోర్డు ఓల్డ్ హౌసింగ్ బోర్డు రవీంద్రనగర్లో గల హరిహర ధర్మక్షేత్రం లోపల ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యం లోపల అశేష జనవాహిని మధ్య లోపల ఈ పూజా కార్యక్రమాన్ని మబ్బులో 7 గంటల నుంచి 7:30 గంటల నుంచి నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ పూజ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా స్వామి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క ఆశీస్సులతోని వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి పనులు 100% అయిపోతాయి అన్నట్లు ఏమాత్రం కూడా సందేహం లేదు। राज्य सरकारने वडेरांच्या एसटी यादीत समावेश करून यांच्या उत्खननासाठी काम करावे अशी मागणी समाजाचे युवा अध्यक्ष रवी यांनी केली। आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषद त्यांनी समाजातील सदस्यांशी संवाद साधला। देशाच्या विविध भागात त्यांना त्या नावांनी संबोधले जाते। ते म्हणाले की ब्रिटिश राज्याच्या काळात त्यांना गुन्हेगारी व जमाती म्हणून ओळखले जात होते। तेव्हापासून आतापर्यंत त्यांचा सामाजिक वर्ग मागासलेपणाचा सन्मान करत असल्याचे त्यांनी सांगितले व त्यांनी आजही आर्थिक प्रगती न पाहता व हलाखीचे जीवन जगावे लागत असल्याची आवेदनाही व्यक्त केली। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 33 జిల్లాల ప్రతి ఎమ్మెల్యేకు ఎస్టీ సాధన తొలి అడుగుకు మేము ఒక వినతి పత్రం ఇస్తున్నాము। 43 సంవత్సరాల నుంచి మేము పోరాటం చేస్తున్నాం ఎస్టీ సాధన కోసం। కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలన్నీ మాకు సహకరించాలని కోరుతున్నాము। ముఖ్యంగా మేము ఏం అడుగుతున్నామంటే మా కులస్తులు వడ్డర పని చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నారు। వాళ్ళకి ఆ ప్రభుత్వం అండంగా నిలిచి మా యొక్క శ్రమని గుర్తించి మాకు కొన్ని పథకాలను ఇవ్వాలని కోరుతున్నాము। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా అనేక శ్రమ ఎండనక కుండనక బండగొట్టు జీవిస్తున్నాము। మమ్మల్ని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము। తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఇంతకుముందు ఎమ్మెల్యేలకు ఆర్డీఓకు కలెక్టర్లకు అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ వాళ్ళందరికీ వినతి పత్రాలు ఇచ్చాము। ఇప్పుడు కూడా కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడింది కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మొదటిసారిగా ఈరోజు ఎమ్మెల్యే ఈరోజు వినతి పత్రం ఇచ్చి ఈ రోజు నుంచి పోరాటం చేస్తున్నాము। కాబట్టి ఈ కొత్త కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇదే రోజు ఫస్ట్ రోజు కాబట్టి మేము ఎస్టీ సాధనకై తొలి అడుగు వేస్తున్నాము।
जय वाड्यारा, जय वाड्यारा। पुलाजी बाबांच्या भक्तांनी सांगितले की भजनामुळे ग्रामीण भागात आध्यात्मिक भावना निर्माण होते। मंडळातील सोनखास गावात श्री संत पुलाजी बाबा यांच्या मार्गदर्शनाखाली भजन मंडळी स्पर्धा सुरू झाल्या। या स्पर्धेसाठी आतापर्यंत विविध गावातील 17 भजन गट पुढे आल्याचे भजन मंडळी स्पर्धा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांनी सांगितले। गावातील ज्येष्ठ सह भजन गटाचे तज्ञ भजन स्पर्धांमध्ये परीक्षक म्हणून काम करतात असे नमूद करण्यात आले आहे। आज हमारे गांव में पहली बार ये पदावली भजन स्पर्धा आयोजित की गई है। इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है बोले तो हमारी जो यूथ पीढ़ी है, हमारे गांव की जो यूथ पीढ़ी है, भजन मंडली है, उनका ये कहना था कि अब बाकी बुजुर्गों का राय लेके उन्होंने ये डिसाइड कर लिया। हमने भी उनको सही सोचकर सम्मति दी। क्या ये मोबाइल के दुनिया में आजकल सब युवा पीढ़ी जिधर बोले उधर जा रही, उसके कारण हम ये भजन पदावली भजन स्पर्धा रखे। इसमें बाहर गांव के लोगों को बुला के, ये जो मोबाइल में तो बहुत नजीक है लेकिन वास्तविकता में आदमी से आदमी दूर होते जा रहा है। इसके लिए कुछ ना कुछ करना, हमारे सोनकास में जो भी प्रोग्राम आयोजित करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक या सामाजिक कार्यक्रम रहता है। भजन स्पर्धा भजन मंडली भाग लिए, अभी तक चल रहा है। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। प्रजावाणी समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी त्यांची प्रलंबित दखल घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या। समस्या सोडवण्यासाठी आदिवासी एकत्र, आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचे सभेत रूपांतर। लग्न समारंभात सहभागी झालेले कंदिसींना, नवविवाहित जोडप्यांना लग्नाच्या भेटवस्तू। 2 डॉक्टरांचा रस्ता अपघातात मृत्यू, रिम्स कॉलेजचा परिसर शोक केंद्र बनला। मोठ्या थाटात सुब्रह्मण्य स्वामी षष्ठी कार्यक्रम, भाविकांनी मोठ्या संख्येने येऊन विशेष पूजा। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।